तो नेक्स्ट आम टॉपिक देखा स्मूथ आउ कार्डियक मसल विषय। ओके, तो आम या आगु कौन स्केलेटल मसल विषय आम देखी नेक्स्ट आम देखा स्मूथ मसल कौन, कार्डियक मसल कौन, आउ एमाने कोउटी प्रेजेंट थांती आउ एमानकर फंक्शंस गुडा कौन कौन। ओके, तो जीवा स्मूथ ताको आम कहि परिबो कौन अनस्ट्रिप्ड एंड इनवॉल्यूंटरी मसल। तो आम देखिबा एबे तार डिस्क्रिप्शन रे कि इनवॉल्यूंटरी आउ वॉल्यूंटरी मसल गोटे दीटा जिनस आसुची कि आमर कॉन्शियस उपरे जदि आमर निजर कंट्रोल थिबो देन ताको आमे कोन कहबा वॉल्यूंटरी मसल, जदि आमर कंट्रोल नथिबो ताको आमे कोन इनवॉल्यूंटरी मसल कहबा। कि एबे जेमती सपोज आमको छींक लागुची तो छींकटा को आमे कोन अटकेई परिबानी, तो दैट कम्स अंडर इनवॉल्यूंटरी मसल। ओके, और सॉरी नॉट इनवॉल्यूंटरी, दैट इज कॉल्ड एज इनवॉल्यूंटरी एक्शन नॉट मसल। ओके ओके, तो दिस एपटे मसल डिफरेंट थिंग्स, एपटे एक्शन डिफरेंट थिंग। वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी एक्शंस अच्छी। वॉल्यूंटरी एक्शन होची जोटा आमे कंट्रोल करि पारिबा, इनवॉल्यूंटरी होची जोटा आमे कंट्रोल करि पारिबा नाही। ओके ओके, सो स्मूथ मसल वेयर इट इज प्रेजेंट, सो इट इज लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स सच एज कोठी थाए स्मूथ मसलटा को वाल रे थाए, ब्लड वेसल्स रे थाए। ओके, ट्राकिया रे थाए, ब्रोंकाई रे थाए, प्रेजेंट इन स्टोमक, इंटेस्टाइन, excretory and genital ducts, and so this is called as visceral muscle because it is present in the walls of visceral organ such as blood vessels, trachea, bronchi, stomach, intestine, excretory and genital ducts, so it is called as visceral muscle. Okay, so as cross striation is absent, it is called as smooth muscle. Okay, so cross striation means some signs. Okay, so some striations are absent, so that's why it is known as what? It is known as smooth muscles. Okay, so आउ थरे हमें देखिबा एटा कोठी प्रेजेंट थाए, एटा मेनली प्रेजेंट थाए हमरो विसरल ऑर्गन मानकरे बा से मानकर वाल रे प्रेजेंट थाए, जाको कुआ जाय कोन, जाको कुआ जाय हमरो ब्लड वेसल्स और ट्राकिया। कोड कोड थाए ब्लड वेसल्स रे थाए, ट्राकिया रे थाए, एंड स्टोमक रे थाए, ब्रोंकाई रे थाए, इंटेस्टाइन रे थाए, एक्सक्रीटोरी रे थाए, जेनिटल रे थाए, एंड आकु कंप्लीटली हमें कौन कहबा विसरल मसल। ओके, एंड ए क्रॉस स्ट्रिएशन आर एब्सेंट इज कॉल्ड एज स्मूथ मसल। क्रॉस स्ट्रिएशन माने कौन, जेमती हमें स्ट्रिएटेड मसल रे देखिले कौन हम जेमती डार्क बैंड एंड लाइट बैंड थांती, तो से जो डार्क लाइट्स माने स्ट्रिएशन गुड़ा बा से जो साइन गुड़ा स्ट्रिएशन गुड़ा से गुड़ा एटी एब्सेंट थाए, तेणु आकु कौन कहते स्मूथ मसल बोली आमे कहबा। ओके, सो इट इज नोन एज स्मूथ मसल। ओके, सो इट इज इनवॉल्यूंटरी, नॉन स्ट्रिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस एंड टैपर्ड। ओके, सो दिस इज टैपर्ड शेप एक्चुअली। ओके, सिंगल न्यूक्लियस एटी अछि। ओके, सो देन आउ कोठी थाए, it is also found in iris and ciliary body of eye. So it is present in iris and आउ कोठी थाए eye रो ciliary body रे भी present थाए, and in the skin as erector pili muscles that are attached to hair follicle. तो हमर जो hair follicle थांती कोठी, एटा सपोज रहला skin, हमर hair follicle जो एमती थांती, ये जो भीतर रहे हेयर फॉलिकल्स। ओके, तो से माने सही जगह प्रेजेंट थांती। ओके, कोडी कोडी थांती आइरिस सिलियरी बॉडी ऑफ आई एंड द स्किन एज इरेक्टर पिली मसल्स दैट आर अटैच्ड टू द हेयर फॉलिकल। ओके, तो सही जगह थांती। नेक्स्ट, यूजुअली स्मूथ मसल्स आर अरेंज इन लेयर्स और शीट। सब एट देखुथिबो से माने मसल गुडा केमती गोटे शीट और लेयर हे कि से माने अरेंज हेचंती। ओके, so smooth muscle fiber is spindle shaped and uninucleate cell, और spindle shape को हमें fusiform cell बोली कहि परिबा, आउ एटा uninucleate माने गोटिए ही न्यूक्लियस अछि। ओके, so myofibril do not show a alternate dark and light band obviously, जाको हमें कोन एठी कहतले क्रॉस स्ट्रिएटेड। तो क्रॉस स्ट्रिएटेड कोन न थाए
absent of cross striated. That means there is no presence of dark and light bands due to irregular arrangement of actin and myosin filament. तो ए जगह actin और myosin filament रो जेतु irregular arrangement अच्छी तेणु एटी dark और light band नहीं. सेठी कौन थिला striated muscle हमर कौन थिला regular arrangement actin myosin माने thin हमर thin रहिला कौन actin ठीक रहिला myosin तो thin thick हेगी थिले तो सेमान गोटे रेगुलर पैटर्न थिला जोथमे सेमान लाइट और डार्क बैंड देखि पारथिले बट एठी दे आर इरेगुलर देयर अरेंजमेंट इज इरेगुलर. ओके सर देखि पाथिबो यूनिन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस हे कि न्यूक्लियस गोटे ही न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि सेमान शीथ और लेयर हिसाब रे प्रेजेंट अछंती. ओके सो नेक्स्ट दे डू नॉट वर्क अंडर द कंट्रोल एंड सो दे आर कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. तो सेमानकर निजर वर्क ऊपर कंट्रोल न थाए. एबे मु जेमति कहिली कि टू टाइप ऑफ एक्शंस आर देयर. वन इज वॉलंटरी एक्शन, सेकंड वन इज इनवॉलंटरी एक्शंस. वॉलंटरी एक्शंस मीन्स on the actions which we have our own control, but in involuntary we do not have our own control. Okay, suppose sneezing hela, coughing hela, ame seta control kari paribani. Sneezing asle mane ame chinki daba. Okay, आ जो जो जिनस को ame control kari paribा. Suppose ame walking ta को ame control kari paribा, एतिक बाट चलीबी. Okay, तो सेटा जीवा कोठी रे volunteer रे. So here ए जगह से कहूची they do not work under the control, and so they are called involuntary muscle. जेहेतु they do not have their control, they are called involuntary muscles. Okay, involuntary muscles. Then smooth muscles exhibit slow and prolonged contraction. Okay, slow and prolonged contraction. Okay, तो स्मूथ मसल ले केमती स्लो कंट्रैक्शन हुए एंड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन हुए. देन दे मे रिमेन कंट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फैटिग. ओके, तो ए जगह जेमती से कहि देला स्लो आ प्रोलॉन्ग्ड माने दे कंट्रैक्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट फैटिग. ओके, विदाउट फैटिग से मानकर मसल फैटिग हुए ही नहीं. ओके, without fatigue, so sustained involuntary contraction called spasms. तो एमाने जो विदाउट फैटिग रे सेमाने जो प्रोलॉन्ग्ड और स्लो कंट्रैक्शन हुए लॉन्ग पीरियड पई तो सेठी सेमाने किछि इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन करंती. दैट कंट्रैक्शन इज नोन एज spasms. Okay, that is not spasms. So the contraction of smooth muscles is under the control of the autonomous nervous system. तो स्मूथ मसल रो कंट्रैक्शन कहा ऊपर थाए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बा जो नर्वस सिस्टम दे हैव देयर ओन कंट्रोल. ओके, दे हैव देयर ओन कंट्रोल. ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक स्ट्रिप्ड एंड इनवॉलंटरी मसल. ओके, सो कार्डियक स्ट्रिप्ड एंड इनवॉलंटरी मसल. The cardiac muscle is striated like the skeletal muscle. जेमिति skeletal muscle टा striated थिला एटा भी सेमति अछि. That means it has sarcomeres, it shows sarcomeres. Okay, then cardiac muscles are found in the myocardium of the heart of vertebrates. तो vertebrate माने की हमें माने we have our vertebrata, so that is why it is vertebrate. Okay, so cardiac muscles are found where? Myocardium. Myocardium को जगह था heart. in heart रे हमर कोन cardiac muscle था. Okay, तो इधर देखो थिबो nucleus are there. These are the myocytes. Okay, so this is the striations are present, cross striation are present, and these are the intercalated disc. They are presented in between cross striation. Okay, then the cardiac muscle cells or myocardial cells are short. Okay, cylindrical, yes, mononucleate or binucleate cells. तो संगर स्ट्रक्चर कौन कौन कहला तो कार्डियक मसल सेल गुड़ा जो माने और मायोकार्डियल सेल गुड़ा जो माने से माने शॉर्ट थांती.
they are short, cylindrical, mononucleate or binucleate cells माने either गोटिए nucleus अच्छी or they have two nucleus in their cell, okay, whose ends branch and form junctions with other cardiac muscle cell, okay, ए जगह से कौन कहला ends branch and form junctions with other cardiac muscle cell, ए जगह तुम देखुथिबो ए जो ब्रांच स्ट्रक्चर से माने करिचंती करिके से माने अलगा अलगा कार्डियक सेल सहित अटैच हेइचंती, ओके ओके ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर पाई से माने अलगा अलगा कार्डियक सेल सहित अटैच हेइचंती एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस और डबल न्यूक्लियस, ओके ओके each myocardial cells is joined to adjacent myocardial cell by electrical synapse or gap junction, तो ठीक होची गोटिए मायोकार्डियल सेल कौन करची आउ गोटे मायोकार्डियल सेल बा ता पाखा पाखी जो सेल सहित जॉइंट करची बाय इलेक्ट्रिकल सिनाप्स और गैप जंक्शन बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन और इलेक्ट्रिकल सिनाप्स, ओके देन दे परमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स to be conducted along the long axis of the cardiac muscle fiber, तो cardiac muscle fiber रो axis through रे से कौन इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कंडक्ट करते बा इलेक्ट्रिकल इंपल्स को कौन करती फ्लो करती ता भितर, ओके जेमती कि आमे पढ़ी थिले मसल रा तीनटा एक्शंस आमे देखिथिले गोटे रहला कौन एक्साइटेबिलिटी, आ गोटे रहला कंडक्टिविटी, आ गोटे हमर कौन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, तो ए जगह देखिबा कंडक्टिविटी होची कौन कंडक्टेड दे परमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू बी कंडक्टेड अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर, तो कार्डियक मसल फाइबर थ्रू रे इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज गेटिंग कंडक्टेड अलोंग देयर लॉन्ग एक्सिस, okay, so here it proves that muscle they can act as a conductivity, okay. The dark lines across cardiac muscles are called intercalated discs, okay, तो ये जो डार्क लाइन गुड़ा अछंती कार्डियक मसल रे आको कौन कहंती इंटरकैलेटेड डिस्क्स और आईडीस, ओके इंटरकैलेटेड डिस्क ये जो डार्क बैंड को कहंती इंटरकैलेटेड डिस्क, देन intercalated discs are highly characteristics of cardiac muscles and are called communication junction, so they have some high characteristics show करंती कोठी cardiac muscle रे जोटा को की जेतु high characteristics show करंती, so they are mainly used for communication, so they are called as communication junctions, so these junctions are mainly communicated, so that's why it is called as communication junction, which allow the cells contract as a unit, okay, so it helps in contraction, okay. Then intercalated disc contain three different types of cell junction, तो एठी intercalated disc रा तीनटा different type of cell junction अछंती, okay, so the gap junction are responsible for rapid conduction of action potential or impulses, okay, तो first जो रहिला तो एबे गैप जंक्शन काम कौन गैप जंक्शन काम कौन देला रेस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और इंपल्सेस, ओके, सो रैपिड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और इंपल्सेस इज द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन, ओके, तो जेतिक भी इंपल्स रहिला हमर नर्व रो जो इंपल्स रहउची, ओके, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स रहउची और जेतिक भी एक्शन पोटेंशियल रहउची, सो दैट इज कंडक्टेड बाय गैप जंक्शन, ओके. So next part, the cardiac muscle of vertebrates does not require any nerve stimulus to contract because it can produce impulse spontaneously from a specialized autorhythmic structure, pacemaker, okay. So what इठी कौन कहला सी कहला जे कार्डियक मसल ऑफ वर्टिब्रेट, सो वर्टिब्रेट मानकर जो कार्डियक मसल्स गुडा थांती, ओके, सो दे डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ व्हाट they does not require any kind of nerve stimulus because they
produce impulses spontaneously from a specialized autorhythmic structure that is pacemaker. ଏବେ pacemaker ର କାମ କ'ଣ? ତ ଏଠି pacemaker ର କାମ ହେଉଛି ସିଏ ଅଟୋ ରିଦିମ୍ କରେ। ଅଟୋ ରିଦିମ୍ କରିକି ନର୍ଭର ଇମ୍ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଏ କ'ଣ इम्पल्स बनाए तो नर्व इम्पल्स थ्रो रे से स्टिमुलस टा फॉर्म करे। ओके तो नर्व इम्पल्स थ्रो रे से स्टिमुलस टा फॉर्म करे। ओके सो दैट्स व्हाई it has been described that cardiac muscle of vertebra does not require any nerve stimulus to contract because it can produce impulses spontaneously from a specialized autorhythmic structure pacemaker. That is pacemaker through रे it can produce impulses. Okay, so it can produce impulses. Then as such the cardiac muscle is involuntary in its function. Involuntary in its function माने तार निजो function उपरे control नहीं. Okay. However, the rate of heartbeat is regulated by heartbeat रा rate टा कहाँ दो regulate हुए and autonomic innervation and hormones like epinephrine and adrenaline. Okay. So epinephrine or adrenaline through रे heartbeat is getting regulated. Okay, so heartbeat is being regulated by an autonomic innervation and hormones like epinephrine or adrenaline. Okay, so it is the structure of cardiac muscle. So epinephrine और adrenaline रो use रे कौन हमारा heartbeat regulate होता है. Okay, this is the complete description about our cardiac muscle. Okay, this autonomic innervation, it means so these hormones. Okay, so autonomic innervation means these hormones like epinephrine or adrenaline. So actually what happens, they control some motor activities. Okay, they control motor activities. Okay, they control some motor activities and some secretory functions. Because they are hormones, they have secretory functions. Okay, okay. So let's move to the next. Okay, so next is the excitation of one myocardial cells results in the excitation of all other myocardial cells quickly to produce a whole-hearted contraction of the entire muscle as a single unit. Okay, तो ए जगह रे से कौन कहिला कि जदि गोटिए मायोकार्डियल सेल रो एक्साइटेशन हैला, ओके, देन कौन होबो रिजल्ट इन एक्साइटेशन ऑफ ऑल अदर मायोकार्डियल सेल क्विकली. जदि गोटिए मायोकार्डियल सेल रो एक्साइटेशन हैला सबु मायोकार्डियल सेल रो एक्साइटेशन है कि टोटल हार्ट रो कंट्रैक्शन टा हबो. ओके, तो गोटे सिंगल यूनिट रे एंटायर मसल रे गोटे हार्ट रो कंट्रैक्शन टा हबो. ओके, देन द कार्डियक मसल इज डिस्क्राइब्ड एज फंक्शनल सिंचियम. ओके, सो कार्डियक मसल को हमें कौन कहबा फंक्शनल सिंचियम. ओके, देन द कार्डियक मसल इज हाईली रेजिस्टेंट टू फैटिग. फैटिग माने ए जगह मसल फैटिग को हमें ऑब्जर्व करि परिबा नाही काहेकि बिकॉज इट हैज न्यूमेरस सार्कोजोम. बहुत गुडा जदि सार्कोजोम रहिला ताहले एटा रेजिस्टेंट टू मसल फैटिग. ओके, देन मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ मायोग्लोबिन दैट मीन्स ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट इज देयर. ओके, सो ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट गुडा बहुत अच्छंती. तो आमर जेतेबेले कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन किछि भी हुआ कि बॉडी फंक्शन करे हमको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दरकार. ऑक्सीजन दरकार हेले भलरे फंक्शन करिवो. तो ए जगह जदि बहुत गुडे माने ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट अच्छंती, बहुत गुडा ऑक्सीजन अछि, तो दे विल नॉट फील मसल फैटिग and they will resistant to muscle fatigue. Okay, and copious supply of blood which facilitate continuous aerobic respiration. Copious माने continuous supply of blood रहिबो जोथि पई हमर aerobic respiration ता proper ही परिबो. तो aerobic respiration by the help of blood and oxygen that
leads to act against the muscle fatigue, okay, and that is more resistant to muscle fatigue, okay. Okay, so एठी रहला तीनटा स्ट्रक्चर हमर आसी गला. फास्ट आसला हमर कोन स्केलेटल मसल, सेकंड आसला कार्डियक, थर्ड आसला स्मूथ मसल. तम पढी देले स्केलेटल मसल रे कोन इनवॉलंटरी एक्शन माने जोटा की कंट्रोल करी हबो एंड स्ट्रिएटेड थाए, स्ट्रिएटेड अछि एटा एंड मल्टी न्यूक्लियस अछि, बहुत गुडा न्यूक्लियस अछि, नॉन ब्रांच्ड. स्ट्रिएटेड कोथि पे हमें कहले बिकॉज ऑफ व्हाट डार्क एंड लाइट बैंड और एक्टिन और मायोसिन पाई रेगुलर अरेंजमेंट हेले डार्क एंड लाइट बैंड हमें पाइबा. देन कार्डियक मसल रे इनवॉलंटरी माने नो कंट्रोल, एटी स्ट्रिएटेड मिलिबो कोन डार्क और लाइट बैंड हमें पाई परिबा. देन सिंगल न्यूक्लियस और डबल न्यूक्लियस अछि, ब्रांच्ड अछि, एटा ब्रांच स्ट्रक्चर अछि, ओके. एटी देखो बा तांकर एडजेसेंट मायोकार्डियल सेल को से माने कोन करंती जॉइंट करके ओटा लॉन्ग ब्रांच फॉर्म करंती, ओके. देन स्मूथ रे कोन होला इनवॉलंटरी एक्शन माने दे डोंट हैव कंट्रोल ऑन देमसेल्फ, okay. They are non-striated, that means no presence of dark band and light band, no presence. They have single nucleus, this is single nucleus, and this is tapered, means this shape is known as tapered shape, okay. So this is known as tapered shape, okay. तो एटा होची हमें कंप्लीटली हमें देखि देले का को मसल भितर स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल, ओके. तो हियर कम्स टू द क्वेश्चन राउंड. स्मूथ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड एज कौन कुआ जाए स्मूथ मसल इज आल्सो नोन एज व्हाट विसरल मसल, ओके. नेक्स्ट कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन वेयर. कार्डियक मसल टा कोडी देखा जाए, कार्डियक मसल्स आर मेनली फाउंड इन हार्ट ऑब्वियसली, okay. So it is mainly found in where heart रे देखा जाए. Then the dark lines across the cardiac muscle are called वे डार्क लाइन जो कार्डियक मसल रे हम जो डार्क बैंड और लाइट बैंड अछंदी से जो डार्क लाइन को हमें कौन कहबा कार्डियक मसल रे इंटरकैलेटेड डिस्क, ओके. सॉरी लाइट बैंड तो न थांती कार्डियक मसल रे उन्नी जो थांती कौन डार्क बैंड गुडा, ओके. कोटा हमरो डार्क बैंड रहला कार्डियक मसल रे, एटा रहला हमर कार्डियक मसल. ए जगह तो डार्क बैंड थांती एक्वा जे कोन आईडी बा इंटरकैलेटेड डिस्क, ओके. व्हाट इज दिस? वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ओके. So this was the complete description about limb, muscular tissue and type of muscles, okay. So we will move to our next session, okay. Thank you.